you? Am I audible to you? Okay, so we are discussing about coordination chemistry last time. So today we are going to see the nomenclature part. Okay, so there are some rules regarding nomenclature. You must know the cation must be first. The name of cation name must be written first. Okay, name of anion will come second. Okay, जेमती आमे पढ़ंती NaCl पढ़ुतिला तो सेथरे कोन होची Na plus Cl minus, so cation comes first, anion then. Okay, remember one thing, all letters will be in small. Okay, will be in small. एथेरे देखिबो organic, when we are doing organic nomenclature, generally what happens, see, if I am writing butane, then I am writing the B in caps lock. Okay, but in inorganic nomenclature, coordination chemistry nomenclature, all letters will be in small, including the first letter. Okay, and if you are writing two words like 2-methyl butane, if you remember, then you are putting one space over here between two words, you are putting one space. But in case of inorganic nomenclature, coordination chemistry nomenclature, there is no space between words. Okay, there is no space between words. Clear? These are the basic rules. But what we are going to see now in check, if you have a complex like this K3Fe FeCN6, okay, and another complex you have CuNH3 whole 4 SO4. Okay, so how you are going to name these things, we are going to see now. Okay, let us start. So the name of coordinate compounds derived by the following principles. Kichita rule some rules are there. We are going to see them in details. Okay, the cation name comes first in both positively and negatively charged coordinations entities. Remember, first thing, you have to write the cation first, then the anion. Now I am going to say you one important rule, one of the most important rule, without which you cannot write any name of the coordination compounds. Okay, so this is the rule. See, if you have this complex CuNH3 whole 4 SO4, okay, another one I have written here CONH3 whole 6 Cl3. Another one, see, K3 FeCN6. Okay, see, in this case, the coordination sphere is written first, then followed by SO4 minus. Here, outside the coordination sphere, SO4 minus means the counter ion is SO4 minus. So this coordination sphere will have a +2 charge. Okay, similarly, here the counter ion is Cl minus, 3 Cl minus are there. So the coordination sphere will have positive charge.
If the coordination pair square bracket term has positive charge, then you know these are cationic complexes. We have already know these things. Okay, so this is see here also the coordination pair has positive charge, so this is also cationic complex. This is also cationic complex. Now, see, in this case, the counter ion is K plus ion, 3K plus ions are here. So, outside there are 3 positive K plus ions. So, the coordination pair will have -3 charge. Okay, in this case, the coordination pair has negative charge, so it is anionic complex. Without knowing these things, you cannot go for nomenclature anionic complex. Okay, clear? So, first you have to identify whether your coordination pair, that square bracket term, is anionic or cationic or neutral. In case of this one, NiCO4. In case of this one, this is neutral. Okay, so first you must know the cation, you must know the anion, and the square bracket term coordination pair is in which side, means cationic side or anionic side. You have to first decide, then you can go further. Okay, see, the ligands are named in alphabetical order before the name of central atom. प्रथमे कौन करिबा जेतबेले आमे गोटे स्क्वायर ब्रैकेट टर्म nomenclature करिबा धर एटा को करचे. Suppose you are going to write the name of this square bracket term or coordination sphere. In that case, you have to first write the name of ligands, then you have to write the central metal name. Okay. Again, if multiple ligands are, see what the rule says here. If you have multiple ligands, like if you have this one and this one, two ligands are there, NH3 and Cl. In that case, you have to write the name of ligands according to their alphabetical order. You know, this is NH3 is amine. Okay, this is amine. This is chloride. So these two are in the alphabetical order already. Means amine will be first, chloride will be second. First you have to write triamine. 3 amino groups are there. So you have to write triamine, then trichloride. Okay. This rule says this part of the nomenclature. Okay. Now, see the next rule. But how to do the naming of ligands? Remember, this is easy. We have seen in the last class, if you have Cl minus, its actual name is chloride ion. Okay, chloride ion. I have told you replace this E by O. So in IPAC, inside square bracket, remember, if Cl is present inside square bracket, then it acts as the ligand. The IPAC name will be chloride. We have seen it in the previous class. Okay, so you know these things. Clear? If you do not know, I have already prepared one slide where I have kept all the name of IPC, name of ligands. We will see there also. ठीक है व्यस्त हबार नहीं तमे एगुड़ाक इजी जिनस खाली क्लोराइडो ब्रोमाइडो एमती SO4 2- its name is sulfate. If it is present inside a square bracket, you write sulfate. Okay, simple. Okay, if ligand is neutral, then do not put O at the end. Just keep its name as it is. CO is known as carbonyl.
So its name is also carbonyl. H2O, you know H2O is aqua. Okay, clear? So let us move forward. So we can see some examples. From that you can also know the name of these ligands. Okay. किसीटा एग्जांपल कले आइडिया हो जिवो व्यस्त हो नाही बर्तन खाली रूल गुडा का टिके चेक कर दियो नेमिंग ऑफ प्रथम देखा आनायनिक लिगैंड लिखुचे न्यूट्रल लिगैंड कैटायनिक लिगैंड ए मानकर नेमिंग केंदे करूचे ठीक अछि नेमिंग रे तीन प्रकार लिगैंड आसिला देखा नेम्स ऑफ आनायनिक लिगैंड जस्ट तुमको एबे कहितली NO3- इज नाइट्रेट नाइट्रेट कार्बोनेट कार्बोनेट मिथाइल कार्बोनेट और एसीटो और इथेनोएट okay CH3CO acetate ion, this is acetate ion. Okay, clear? See, this is SO4 2- sulfate is named as sulfato, thiosulfato, OCN cyanato. Okay, so just put O at the end instead of E. Okay, you will get the IPS name of ligands. See, these are the negative charge. These ligands have negative charge. SO3 2- sulfide, this is called as sulfito. ClO2- chloride, chlorito. OCl- hypochlorite, hypochlorito. NO2- nitrite, nitrato. HSO3- hydrogen sulfide, hydrogen sulfide. Just put O at the end. If it is present inside the square bracket, fluoride, chloride, bromide, iodide. Fluoride, chloride, bromide, iodide. Easy. Okay. So these are the things you will find anywhere. Any book you take or any note you take or you can take. Remember, ଆମର କିଛି nomenclature କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ important ସବୁ ଅଛି. Oxide O2- is oxide. Remember these two will help you in many nomenclature because people will do mistake here. This is peroxide O2- O2- is peroxide, O-2 is oxide. Okay, clear? Remember these two things, important. Okay, these are also important. These are ambidentate ligands. Last time we have discussed these are ambidentate ligands. Means they have two donor atoms at a time they form one coordinate bond. They have two donor atoms at a time they form. देखो CN-, if you have CN-, टिके मने पके दउची CN- रे डोनर आटम के अछि C. सो जेतले मेटल आसीबो कार्बन आटम ही जॉइन करिवो NC- रे कोऑर्डिनेट किए करे नाइट्रोजन. सो एथिरे होची N डोनर जो थिरे मॉलिक्यूलर फॉर्म समान थिबो दीटा डोनर आटम थिबो बट बॉन्ड कला बेले एट ए टाइम गोटे एलिमेंट दी जन जाक बॉन्डिंग कर परिबे. देखो C ट्रिपल बॉन्ड N ये माइनस एठी लोन पेयर ये भी मेटल से तो बॉन्ड कर परिबो ये भी मेटल से तो बॉन्ड करि परिबो एट ए टाइम दी जन जाक करिवे नाही जणे एट ए टाइम वन बॉन्ड फॉर्मेशन करूथिबो से केस रे तांको कहि परिबो एम्बिडेंटेड. किंतु जदि एट ए टाइम दी जन जाक करिवे ताले से माने हे जिबे बाइडेंटेड लिगैंड. ओके, सो या CN- cyanide तना हे जो cyanide. NC- isocyanide, isocyanide. आ दिटा पेयर होचंती NO2-. ठीक रे सुन था ए दिटा बहुत इंपोर्टेंट रहउची NO2- तो एथिरे काहा ऊपर एक्चुअली माइनस टा रहउची या ऊपर रहउची नाइट्रोजन ऊपर. So it is called, its IPC name is
नाइट्राइटो कहा ऊपर अच्छी लोन पेयर ए जो माइनस चार्ज नाइट्रोजन सो यू हैव टू पुट वन नाइट्रोजन डोनर हियर ओके या ना हे जाउची नाइट्रेटो एन सेमती ओ एन ओ माइनस देख ऑक्सीजन ऊपर माइनस चार्ज अच्छी सो इट इज नाइट्रेटो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नाइट्रेटो ओ डोनर ओके लिखा है नाइट्रेटो ओ नाइट्रेटो एन आईपीएसएनएल ओके लेट अस मूव फॉरवर्ड किछटा एग्जांपल देखिबा सेमती आउ दिटा अछंती एम्बिडेंटेट रे ओएनसी जोथरे होची सियानेटो एनसीओ आइसोसियानेटो देखो ठीक रे यार स्ट्रक्चर पचारिबो एससीएन एनसीओ सीएन एनसीएस सेमती सेमती एटा तो सियानेट जानिचो सीएनओ माइनस को हमें कौन कहते सियानेट सीएनओ माइनस अब सियानेट सेमती आइसोसियानेट होची एनसीओ माइनस ठीक अछि तो यांकर जेमती पेयर अछंती ए दिटा बहुत थर पचरची एससीएन एनसीएस ठीक अछि एससीएन कोन हे जाउची देखो जेमती सीक्वेंस रे लिखा है सेमती लिखि दबो एस या स्ट्रक्चर सिखे दउची बहुत टाइम दरकार रे आसीबो एससीएन लिखि देला तमे जानछ राइट साइड रु बॉन्ड दबा आरंभ कर दबो नाइट्रोजन रे केतेटा बॉन्ड रहिबो तीनटा नाइट्रोजन तीनटा बॉन्ड देखाय कार्बन चारटा बॉन्ड करे ऑलरेडी तीनटा हेची एठी गोटे दे दबो ठीक अछि नाउ सल्फर मेक्स टू बॉन्ड्स हियर यू हैव वन बॉन्ड so another negative charge will be on sulfur then come to ncs जेमती सीक्वेंस अछि सेमती लिखि देला राइट रु बॉन्ड दबा आरंभ करिवो एस एस दीटा बॉन्ड कला कार्बन चारटा बॉन्ड करे ऑलरेडी दीटा करिछि आउ दीटा करिवो एठी दीटा दे देला नाइट्रोजन फॉर्म करे तीनटा बॉन्ड से दीटा बॉन्ड करिछि आहुरी गोटे शॉर्टेज अछि तेन करता ऊपर माइनस चार्ज तो या ना हे गला थायोसियानेटो देखो इथरे डोनर एटम की अछि एस सेथिमाय लेखा हेछि देखो थायोसियानेटो एस ओके डोनर एटम मेंशन हेछि नले खाली थायोसियानेटो भी लिखि परिबो एनसीएस रे डोनर एटम के हे जाउछि नाइट्रोजन डोनर एटम पचरछि ठीक अछि डोनर एटम जो आगे को बॉन्डिंग जतल पढिबो एथिरे सेथिरे भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन तमु मिलि जिवो तेन करी एबे ठारो ताकु टिके ध्यान से देखिथिबो किए डोनर एटम स्पेशली एम्बिडेंटेट रे डोनर एटम पचरछि एम्बिडेंटेट का तीनटा पेयर तम कह देली सीएनएनसी नाइट्रेटो एन नाइट्रेटो ओ आ गोटे थायोसियानेट आइसोथायोसिनेट ए तीनटा पेयर मन रखो बहुत सारा तमरो प्रॉब्लम सॉल्व हो जिवो एम्बिडेंटेट रिलेटेड ओके सो देखो वर्तमान पर्यंत तमे जेते पढुथिला सब लिगेंड कोन थिले नेगेटिव चार्ज वाला कोन थिले नेगेटिव चार्ज वाला नाउ देयर आर सम लिगेंड्स व्हिच हैव कोन तमरो ये अछंती न्यूट्रल लिगेंड यांको ना स्पेशल ना एथरे किछि तमे चेंजेस कर परिबो नाही जस्ट यू हैव टू रीड इट केयरफुली वाटर थिले ता ना कोन हे जिवो एक्वा NH3 थिले अमीन AMMINE CO कार्बोनिल NO नाइट्रोसिल देखो स्पेशल केस रे मन रखिबो ई NO को काहे कि ना ए NO ता तीनटा जाक रे हे परिबो NO न्यूट्रल हे परिबो NO प्लस हे परिबो NO माइनस हे परिबो तेनु करी हमर स्पेशली ए दिटा बहुत सारा दरकार हुए NO प्लस आ NO न्यूट्रल NO न्यूट्रल थिले ता ना होची नाइट्रोसिल ओके मनैला NO न्यूट्रल कोन हे जिवो नाइट्रोसिल क्लियर यस कोहा ओके
या को टे स्क्रीनशॉट नै के रखि थिबो पिले स्क्रीनशॉट नै था नले जतले कहिबी सेति बेले नोमेनक्लेचर टिके देखि देखि कि कोनोसी बुक जदि पाखर थिबो भी ताको टिके देखि देखि कि प्रथम कोन कहला नुआ ना पढुछ ना से ना गुडा को हठात कि मने पडिबनी तो एबे नुआ ना हमें कहि दबु सिना किंतु जतले परीक्षा रे करियो निजे करियो सो स्टार्टिंग रे पाखर टिके रखि कि गोटे चार्ट बनै दियो सब बेले लिगेंड्स रो गोटे चार्ट बनै दियो you will be happy always. Okay. So these are also some neutral ligands. PPS3 is a triphenyl triphenyl phosphine. Okay. C6H5 benzene एतिकी हिं दरकार बेसी एगुडा को जेतल करिवो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर आसी माने सेगुडा को आसी जीवो एटा को टिके स्पेशली देखा द नेम ऑफ लिगेंड्स विथ पॉजिटिव चार्ज नेम ऑफ लिगेंड विथ कोन कहछि पॉजिटिव चार्ज रे देखा आ टिके पूर्व जस्ट वी हैव डिस्कस्ड NO न्यूट्रल भी हे परिबो NO पॉजिटिव भी हे परिबो if NO is positive एको कहंती नाइट्रोसिलियम बा नाइट्रोसिलियम आयन कहउचंती एटा को देखो गोटे न्यूट्रल लिगेंड हम भी देखिथिले NH2 NH2 तम पढिछ याको ऑर्गेनिक रे दिस नेम इज हाइड्रोजन इट्स नेम इज hydrazine if you put one H plus ion over it will become NH2 NH3 plus NH2 NH3 plus. So here one donor atom will be here. This name is hydrazinium ion. Again NO2 plus NO2 plus. Don't get confused. NO2 plus is nitronium ion. Okay. Clear? ए तीनटा टिके लिखि रखि था ये काम रे आसीबो बा स्क्रीनशॉट नै जाओ ठीक अछि see if more number of same ligands are present prefix is used di-tri धर तीनटा अछि di-tri एगुडा का रूल्स ओके एटा जानिछ if three chlorides are present trichloride if six water is present hexa aqua these are natural okay so आमे गोटे दिटा एग्जांपल पाखरे पहुंचिले आउ टिके इजीली तमे जिंस गुडा का देखि परिबो ठीक अछि देखा प्रीफिक्सेस कोन लागिला दुटा थिले डाई तीनटा थिले ट्राई चार टेट्रा 5 पेंटा 6 हेक्सा 7 हेप्टा ओके NH3 2 diamine session ठीक अछि when the name of ligand is already includes di tri एटा तो टिके आगो को पळैले बेसी आगो को फिर भी जानि था if suppose you know एटा कहा विषय कहला ना जो थिरे एमितिया ना आस्थिबो suppose you know ethylene diamine this is bidentate ligand यार ना होची ethylene diamine ओके ethylene diamine जदी ए भले केसेस अछि ethylene diamine अछि देखो या ना रे ऑलरेडी गोटे कोन अछि डाई ओके the name itself contains the word like di tri tetra etc then if तुमको एटा गोटे देथिले कि असुविधा नाही if you have En2 then in IPSC nomenclature what we are going to write now for 2 you have to write bis ethylene diamine okay bis trees ठीक अछि तापर देखा से कहछि the ligand's name is kept within the bracket to avoid ambiguity ए डाई आ बिस भितर डिफरेंस करिया पई लिगैंड रो नेम टा को ब्रैकेट रे रखि दबो ओके
सो गोटे एग्जांपल देखले जानि परिबो देखि दियो ऑलरेडी कहि सालेनी स्टिल देखि दियो से कहला दीटा थिले 20 तीनटा थिले 30 चारटा थिले टेट्राकिस 5 पेंटाकिस 6 हेक्साकिस लाइक दिस इट गोज ऑन ठीक अछि नाउ देखो en2 en2 पय हम कोन लिखुचे ना एटा लिखिचे देखो कौन लिखा है 20 एथिलीन डाइअमीन लिखा है 20 टा बाहर अछि हाइफेन दिया गला एठी कोन ब्रैकेट रे लिगैंड रो नेम रखा गला en इज एथिलीन डाइअमीन सो 20 एथिलीन डाइअमीन क्लियर रे हबो तो माने एतिकी जिंस जानिचो देखा there is no deletion of vowels or use of hyphen tetraamine hyphen नहीं दीटा जाक ए रहिची ठीक अछि भाबुची एतिकी पर्यंत रेडी आमे एबे डायरेक्ट नोमेनक्लेचर को जाई परिबा नोमेनक्लेचर करि परिबा ठीक अछि एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस तुमको एठी ही सिखोची तापरे आमे नोमेनक्लेचर डायरेक्ट एग्जांपल करिबा देखो गोटे जति ठीक रे देखुता पिले एठी सबुठारु इंपोर्टेंट जिंस अछि प्रथमे तह suppose you have one coordination complex like this the coordination complex itself has positive charge means the coordination sphere is cationic okay प्रथमे देखो ए दुटा कॉम्प्लेक्स को देखो CONH3 whole 6 एठी अछि Cl3 now you have outside counter ions are Cl 3Cl minus 3Cl minus are present as 3 counter ions so the charge on this coordination sphere is plus 3 means your coordination complex is cationic in nature okay is cationic in nature if it is cationic then the name of metal is remaining as such means ताना cobalt अछि जति ताना cobalt ही रहिबो कोन रहिबो cobalt थिले cobalt रहिबो निकेल थिले निकेल then तमरा aluminum जहा भी थिबो जिंक जहा रहिबो सेया रहिबो ठीक अछि but ए कॉम्प्लेक्स टा को देखो K3FeCN6 if you have this complex then here you have 3K plus ions the anionic side the complex coordination sphere side is anionic in nature so it has minus 3 charge so the coordination sphere is anionic this there is a rule for anionic side most important thing if you have the coordination sphere as anionic one then the metal name ends with ate the metal name ends with ate means you cannot write Fe or iron for this complex you have to write ferret okay you cannot write for manganese you have to write manganate nickelate cobaltate cuprate like this okay yeah for copper cationic side you will have a copper on anionic side cuprate okay so this is the most important thing सेइथि पय तुमको स्टार्टिंग रो कहि देथिले first identify square bracket term is cationic or square bracket term is anionic without identifying these two things you cannot do correct nomenclature okay am I clear
See, if these are the cationic, on cationic side, the names will be aluminum, platinum, molybdenum, zinc. But if the coordination sphere is anionic, then the name will be aluminate, platinate, molybdenate, zincate, like this. Okay? Hmm? See, ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ବହୁତ ପାଠ ଦେଖ କାଟାୟନିକ ସାଇଡ ରେ ଥିଲେ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସାଇଡ ରେ ଥିଲେ କୋବାଲ୍ଟ ରହିବ ପ୍ଲାଟିନମ ରହିବ କାଟାୟନିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରେ ଆନାୟନିକ ରେ କୋବାଲ୍ଟେଟ ପ୍ଲାଟିନେଟ ଓକେ the oxidation state it ଆମେ last class ବି discussion କରିଥିଲେ so without oxidation state there we cannot write the IPS name of a complex so if you know you have a complex FeCN6 3 minus or K3 FeCN6 first you have to find out the oxidation state of the central metal over here is Fe you have to find the oxidation state of Fe. So outside there are 3K plus ions, 3 into plus 1. Okay. Plus for Fe you have to take X. Then you know the charge of this ligand 6Cn minus 6 into minus 1. Whole complex is neutral. So you have to write 0. Okay. Then solve it. You will find X as plus 3. First you have to find the oxidation state of what central metal atom or ion. Once you know the oxidation state, remember do not write the number in case of IPC name. If you are writing here, you know just now we have discussed the name will be ferret. The name will be ferret because it is on the anionic part. Okay. After the name of metal, you have to write triple I in your Roman numericals. You have to write the oxidation state. Roman numericals. For oxidation state, if you got 2 plus, then you have to write double I. Sorry. Double I. Okay. If you have 0, put 0. But if you have a plus 1, then write I. Okay. Clear? Up to now, I think you know the rules little bit. Okay. Let us take one to exam. If there is any water of crystallization, it is to be included in the name. See, if you have water of crystallization means these dot H2O terms, dot H2O. Okay, then at the end you have to write if it is 2H2O dihydrate, 3H2O trihydrate, 4H2O tetrahydrate like this. Okay, this H2O is inside square bracket, so it is written as ligand here, tetra aqua. These two are not same. If any dot water is remaining at the end, then you have to write it separately. Clear? Okay. So, as I have already mentioned this one, no space is left between the names that refer to the same coordination entity. ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି gap ରହିବ ନାହିଁ. Nomenclature ର କିଛି examples let us see. ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ଏଇଟା ଟେବୁଲ ୟାକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ରଖିଦବ କଣ ପାଇଁ ତମକୁ ମେଟାଲ ଗୁଡାକର ନାଁ ଦରକାର ପଡିବ. The name of metals are recorded here. On the left side metal symbol is there. This is if it is present on the cationic complex side, cation side, then the name remains as such. If it is present on the anionic side, it takes the ATE term.
scandium, scandanate, titanium, titanate, vanadium, vanadate, chromium, chromate, manganese, manganate, iron, ferrite, cobalt, cobaltate, nickel, nickelate, copper, cuprate, zinc, zincate, aluminum, aluminate, boron, borate, gold, orate. Okay, clear? Just take a screenshot. We will move forward for some examples. Okay. Clear? आकु जाई परिबा? अरे किसी हाँ नहीं कर रहा। अच्छा तो तमन नहीं। Okay. See. मैं गोटे दिना कंपाउंड नोचे देखो फर्स्ट एग्जांपल आसिले ठीक अछि एग्जांपल LiAlH4 प्रथम जिंस कोन करंती एथिरे से विषय टिके जानि था ठीक अछि पाठ कहला जेतबे ए भली केसेस आसीबो फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ a central metal टाइट के ना aluminum so go for oxidation state. The oxidation state will be, you know, the formula is given lithium AlH4. You know, this is a reducing agent in organic chemistry. So, lithium has +1 charge. Plus, for aluminium, you have to take X plus. This is, remember, most important thing. Most first example, एटा को भी करिछि. कौन एग्जांपल कहली नॉर्मल गुडाक समस्त कहउचंती एथरे पिला हैरान रे पडिबे कोन ना समस्त जानती H टा प्लस करी कि नै जानते कोन भाई HCl H2SO4 गुडाक सब H प्लस थाए but H cannot act as ligand in case of proton or in the state of proton H plus thele se ligand hi pariba nahi ligand हवा पाई सबले H को स्टेट रे थाए माइनस या को हमें कौन कहंती हाइड्राइड कौन कहंती हाइड्राइड ओके सो हाइड्राइड H minus so charge is -1 4 H minus are there so 4 into -1 is equal to 0 so X is coming as +3 oxidation state जेतबे लिखियो लास्ट क्लास रे भी कहितली without plus or minus sign there is no meaning of oxidation state. Oxidation state okay sir 3 बाहर जे मो लिखिबी X is equal to 3 0 mark पाइबो ठीक अछि because without sign there is no meaning of oxidation state. Okay so सबले साइन दबा अभ्यास रख किछ असुविधा नाही तार ऑक्सीडेशन स्टेट केते पाइला 3 ओके सो कोन करिबा ना प्रथमे काटायन एथरे काटायन ना के अछि लिथियम तो प्रथम कहना लिखिबी लिथियम तापरे देखो कोन अछि एल्युमिनियम हाइड्राइड एटा अछि स्क्वायर ब्रैकेट ता होछि तमरो कोऑर्डिनेशन स्फीयर रो नोमेनक्लेचर रे आगो लिगैंड लेखा हबो तापरे मेटल आगो लिगैंड देन मेटल फर्स्ट लिगैंड देन मेटल ओके सो फर्स्ट लिगैंड के अछि हाइड्राइड लिगैंड हेले कोन हे जिवो हाइड्राइड कोन हे जिवो हाइड्राइड केतेटा लिगैंड अछि how many ligands are there 4 ligands are there so you have to take the number first tetrahydride okay tetrahydride see the coordination sphere here is on anionic side because Li has positive charge so AlH4 has minus charge so coordination sphere is on anionic side if it is on anionic side then you cannot write aluminium you have to write aluminate okay so the name will be
actually in a continuous sentence you have to write एठी gap दबो नहीं मु एठी जागा नहीं बोले एपटे कर देली एठी लिखि दबो aluminate aluminate लिखि सारला परे मने की ब्रैकेट रे ता ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन हबो ऑलरेडी डिस्कशन कर सारची जेतबळे मेटल लिखिबो विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिबार नाही must remember without oxidation state आमे लिखिबा नाही मेटल रो नेम ठीक अछि ताले यार ऑक्सीडेशन स्टेट केते आछि 3 कोथरे लिखिबा रोमान लेटर तो एटा हे गला ट्रिपल आई ओके दिस इज द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड तुम देखि परियो एठी मु लिखि भी देइथिली तुमको शिक्षा पे करली तो देखा प्रथम काहा को लिखाइ छि लिथियम देन काहा को लिखाइ छि लिगैंड देन लिखाइ छि एल्यूमिनेट ट्रिपल आई क्लियर सेमती एठी आ गोटे कॉम्प्लेक्स अछि Na3CONO2 6 कर परिया देखा प्रथम ताहले एठी काहार ना लिखिबा एके चिंता करके कोह काहार ना लिखिबा ना क्लियरली आमे जानि पारुचे या ना लिखिबा का ना लिखिबा एठी काटायन की अछि सोडियम सो प्रथमे सोडियम ना लिखा हेथिबो देखो सोडियम ना प्रथमे आसीबो केतेटा सोडियम अछि तीनटा सो एपटे रहिला +3 चार्ज so this coordination sphere will have -3 charge that means now it is also in cow side anionic side okay so first the name of ligand will be written 6 ligands are there so hexa will be there so see the name will first तमे oxidation state भी काढी परिबो अरे काढी परिबो ना करिवि देखो एटा निजे ट्राई करो Na3 अछि गोटी गोटी करी जाओ NO2 होल 6 प्रैक्टिस हे जीव गुडाए एथरे प्रथमे ऑक्सीडेशन स्टेट काढ काहार कोबाल्ट रो ये हे गला 3 प्लस सोडियम ता तीनटा अछि 3 प्लस देन फॉर कोबाल्ट टेक x वर्तन केतेटा लिगैंड अछि 6टा लिगैंड हेले NO2 रो चार्ज थाए -1 ताले 6 into -1 is equal to कोन हे जाउची 0 whole complex is neutral so now you are getting x is equal to +3 okay so cobalt has +3 oxidation state now the name will be देख पिले बहुत पिला एटा को देखि देखि कि या ना करंती ओटा मिस्टेक केमते करंती कहूच एटे पिला लिखि देबे ट्राइसोडियम कोन लिखि देबे आगो कि ट्राइसोडियम बिल्कुल भी सेमते करिवो नाही जेतळे ई भळे मन रे कंफ्यूजन आसीबो रिमेंबर द नेम ऑफ MgCl2 या ना तमे पढुछ मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड कोहनो कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड कोन पई आयनिक बॉन्ड भितरे नंबर मेंशन हुए नहीं तो एटा भी एटा भितरे आयनिक बॉन्ड अछि तन करी सेठी नंबर मेंशन करिवो नहीं सो ट्राइसोडियम लिखिबार नहीं केवल सोडियम रहिबो देखो ना कोन हेछि लेखा हला केवल सोडियम प्रथम काटन पे तापर पार्ट रे देखो एटा टे कैपिटल हे जाय छी याको स्मॉल करिवो हेक्सा 6टा अछि बोली हेक्सा लिखा हला एठी देखा स्मॉल थिला एठी टिके कैपिटल बाय मिस्टेक रे रहि जाय छी ठीक अछि सो हेक्सा 6 लिखिला एटा NO2 हमको सिखेथिले डेटा बाइडेंटेड लिगैंड एम्बिडेंटेड लिगैंड के थिले NO2 माइनस आ गोटे ONO माइनस NO2 माइनस इज नाइट्रेटो N एटा होची नाइट्रेटो O एठी अछि हमर नाइट्रेटो N तन करेटा हेक्सा नाइट्रेटो एठी N रहिबो N रखिलो कोबाल्टेट 3 hexanitrito N cobaltate because cobalt is present on anionic side its oxidation state is +3 so cobaltate 3 clear होची देखिए एटा ट्राई करो एटा सहज अछि सहज अछि ना के कहि पारुछ देखिबा
ऑक्सीडेशन स्टेट प्रथम काढी परिबा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है जाउची एटा देछि कॉम्प्लेक्स NaAuCN होल 2 तो Na रा होछि +1 प्लस Au रा काढिबो x प्लस 2 into Cn minus so cyanide has -1 charge is equal to कौन है जाउची 0 ताले मते कह एटा केते हे जिवो x is equal to +1 हबा ऑक्सीडेशन स्टेट आछि +1 ताले जानलो एटार ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाइछ +1 अतन नेम करो के जण कहि पारुछ टिके जल्दी जल्दी कहिलो जण दि जण के कोन करिछ आता पेन चलाओ पिल्लाई ହେଲା देखो प्रथम का ना आसीबो सोडियम तो एट लिखि देली सोडियम तापरे ए स्क्वायर ब्रैकेट टर्म रे के अछि लिगैंड के अछि सियानाइड केतेटा अछि दीटा तो डाइसियानाइड एठी गोल्ड गोल्ड आनायनिक साइड रे अछि तो तना आसीबो ओरेट एटी इ लागिबो ब्रैकेट रे रहइबो आई सिंपल हबो लिखि दियो सोडियम डाइसियानो इले देखो एठी गोटे डाइसियानो लेखा हिची ठीक रे कहि दउची वर्तमान 2014 नोमेनक्लेचर रूल परे ये चेंज हे जाइथिला तो आगरु चली थिला डाइसियानो चलुथिला ठीक अछि एबे जते क्वेश्चन आछे सियानाइडो आसुची पूरा सियानाइडो पुराना जगह रे कोठी कोठी तमे देखिया को पाइबो सियानो तो से तल डरिबो नाही जानि जिवो जे एटा पुराना स्टाइल रे क्वेश्चन ता रहि जाईची तो सेही हिसाब रे तमे ताको टिके ये करिवो निजे चेंज कर देई पारिबो ठीक अछि देखो Na2ZnCl4 सहज सहज अछि देखो Na2ZnCl4 कोन हेथिबो सोडियम ठीक अछि जिंक रासिबो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एठी आसुथिबो +2 केते आछे +2 सो केते कर परिबे कह कह सोडियम रहि गला ठीक अछि तापर के रहिबो टेट्राक्लोराइडो क्लोराइडो हे जिवो और क्लोरो चलिबो किंतु बेटर तो माने दीटा जाक शिखि थाओ वर्तमान जुग रे कोन हे जाउची क्लोराइड पुराना जुग रे कोन होतला महाभारत जुग रे होतला तमरा क्लोरो ठीक अछि क्लियर आको जिबा आउ किछि नोमेनक्लेचर अछि तमे निजे ट्राई कर परिबो देखो ये गोटे बढ़िया नोमेनक्लेचर एथिरे इंटरेस्टिंग जिंस देखो बर्तन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केते काढ Fe ठीक अछि कॉम्प्लेक्स ता ए देछि Na3Fe2O4 ना जानि थिले ही हम करि परिबा C2O4 सेथि भाई हम कहिथिली लास्ट क्लास रे भी लिगैंड पढैला बेले लिगैंड जतल पढुचे लिगैंड गुडा कर नेम भी कहिथिली से टाइम रे कहउथिली जे टिके ताको स्क्रीनशॉट मारि कि किबा कोनसे गोटे टेबुल आकार रे करि कि रखि दबो सो एथिरे एतक पार्ट हे गला +3 the sodium has +3 charge for iron you have to take x now there and this is 3 there are 3 ligands 3 into this is your C2O4 2 minus this is oxalate ion its structure is like this COO minus connected to COO minus this is oxalate ion so it has two negative charges so I have to put -2 here that is equal to 0 now you can find the value of x
X is coming as plus 3. X is coming as plus 3. So iron has plus 3 oxidation state. Now I have to write the name. What will be the name? Now sodium. Okay, 3 ligands are there. So it will be tri. Name will be oxalate, will become oxalato. Oxalato. Ferrate is on anionic side. The charge on the coordination pair is -3. So it will be written as ferrate. Ferrate. The oxidation state is +3. So I have to write triple I. Okay. So see, the name will be like this. Sodium trioxalato ferrate 3. देखा ये तमरा मोस्ट बहुत फेमस कंपाउंड ठीक अछि ये तमरा बहुत फेमस कंपाउंड कौन फेमस कंपाउंड ता देखा K4FeCN6 दीटा जिनस कंपाउंड करूचे दीटा जाक पाखा कि थिबो एबे देखि दियो कहिला एटा को देखा K4FeCN6 रे clearly देखा जाउची this is positive side, this side is anionic, so complex will have negative charge. Find the negative charge on K4FeCN6. दीटा complex करिया K4FeCN6 ठीक अछि एइथरे देखा एटा केते हे जिवो 4 प्लस Fe by x ने गले 6 Cn minus, so 6 into -1 is equal to 0. Then find the value of x. X is coming as +2. So iron in this case is in +2 oxidation state. But remember, आखरी गोटे complex कहूची तारी भाई एटा हे गला K3FeCN6 K4 नुहा K3FeCN6 ओके तो ए केस रे तमर कोन हे जिवो ना ऑक्सीडेशन स्टेट काढ एठी तीनटा K प्लस अछि सो 3 प्लस x plus 6 into -1 is equal to 0. In this case x is coming as +3. So oxidation state here will be +3, here will be +2. Both are not same complexes because outside here you have 4 potassium ions, here you have 3 potassium ions. So the negative part of this complex is FeCN6 4 minus, here the negative part is FeCN6 3 minus. The charge on anionic sphere is different. Okay, so if the charge is different, then the complex will be different because due to the difference in charge, the oxidation state of metal is different. Sorry, here you have oxidation state 3, here you have 2. Okay, so the oxidation state of metal is different. Here you have to write ferrate 2 double I. Here you have to write ferrate triple I. Okay, so check the name. The name will be potassium. For K you have to write potassium. For 6 Cn minus 6 cyanido hexacyanido and ferrate 2. Okay, the name will be hexacyanido cyano. It is written right cyanido. I have corrected this one, but how it came to this? Hexacyanido ferrate 2. Ferrate 3. 2. The next one will be your this one. Same as this one. Okay, now you can do it. This will be instead of a ferrate, you have to write aluminate. Potassium trioxalato aluminate 3. See this one, do this one. Okay,
हे परिबा अरे हबा this is interesting. This is NiCO4. NiCO4. This is a neutral complex. This is a neutral complex because it has only one coordination pair, no charge, nothing. पिले देखो ए भले देखि confusion हे जीवनी. अच्छा एठी की जिबा पूर्व आ गोटे जिंस कहि सारे तापरे सेटा को कहि. ठीक अछि सुन एटा को देखो बेले बेले नोमेनक्लेचर रे तुमको एमिति ए जो कंपाउंड टा को देखो छ ए पूरा कंपाउंड देई नथिबो. The whole compound will not be given. Instead एतिकी देइथिबो FeCN6 सपोज देइची 3 माइनस ना 4 माइनस हो ठीक अछि 4 माइनस में 3 माइनस में जानी ठीक अछि ए भली केस रे देइथिबो किंबा एटा देइथिबो CuNH3 whole for 2 plus ए भली देइ. So how to write the name of these complexes? ये पूरा कंपाउंड देनी देखो आयन देइची कोन देइची आयन पार्टटा ही देइची बाहर जो K4 थिला एथे एठी गोटे K4 थिला याको छाड़ देइची से केवल एतिकी रो नोमेनक्लेचर पचारची. तो ए केस रे प्रथमे ऑक्सीडेशन स्टेट काढिबो सेंट्रल मेटल रो केमति काढंती x प्लस एटा पे केते नै जिबी 6 into केते हे गला -1 is equal to -4. The charge of anion or cation will be equals to the summation of the charge inside the coordination sphere. Okay, so now देखो या ऊपर केते चार्ज अछि 4 माइनस ना तो ए समस्तंकर चार्ज टा कहा से तो समान होबो या से ताहले जाय के तमे x टा पाई परिबो. ठीक अछि ताले x is equal to केते आछे देखा -4 plus 6 is equal to say plus 2 आसिला एठी भी देखो केते ऑक्सीडेशन स्टेट आसी 2 सेही 2 ही आसीबो किंतु तमे जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स करके 0 करथिला एबे तार चार्ज ता लेखि कर हला. नाउ see you can write the name. एबे पोटेशियम नाही किछ नाही केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर रो नोमेनक्लेचर कोन लेखिबे को हेक्सा ligand first hexacyanide कोन हे जाउची hexacyanide एफिटा आनायनिक रे अछि ना कैटायनिक रे आनायनिक सो फेरेट ना आयरन फेरेट ब्रैकेट रे केते लिखिबे डबल आई इला एतिक लिखिबे छाडी दियंती भूल ହେଇଯିବ ମନେ ରଖିଥିବ ସେ ତମକୁ compound ଦେଇନି ଗୋଟେ ion ଦେଇଛି so you have to put one word ion at the end जोठी ionic species ଦେଇଥିବ लास्ट ଗୋଟେ ion ଲଗେଇ ଦବ जे anion लिखि परिबो भलो न लिखि परले खाली ion लिख जे cation लिखि परिबो भलो जे न लिखि परिबो केवल ion लिख. Okay, so here you find the oxidation state. This will be x plus 4 into NH3 is neutral ligand. So to do the oxidation state, you must know the charge on ligand. So NH3 has 0 charge is equal to +2. So X is coming as +2. So this is cationic complex. The name will start from the name of ligand. How many ligands are there? 4. So name will be tetraamine. Okay, copper tetraamine. On the cation side it is present, so there is no change in name of metal, so copper will be written in the bracket double I, Roman double I will be written, and this is an ionic species, so I have to put one ion at the end. Okay, this is the nomenclature. Now you can come to this side. Okay, NiCO4 ठीक अछि NiCO4 परे एटा करे देखो यार ऑक्सीडेशन स्टेट कार्ड
So oxidation state of nickel will be X plus the ligand CO is neutral, so 0 is equal to 0. It has no charge, so X is coming as 0. Oxidation state of nickel here will be 0. So the name will start from the name of a ligand, that is 4 ligands are there. Name will be tetra, CO name is carbonyl, CO name is carbonyl. Okay, nickel on cation side, nickel 0. You have to put a 0 in the square bracket. Okay, clear? Tetracarbonyl nickel 0. Clear? See, this is the example having your ligand name having di-tri. Already we have discussed in the example that if the ligand name has a di or tri and it has multiplicity, means it has multiple times repetition, then you have to write B trees accordingly. Okay, so here the name will be starting from small t. ठीक আছে देखो प्रथमे यार ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट has oxidation state X 3 ethylene diamine 3 into ethylene diamine is neutral ligand, so 0 plus 3 Cl minus ions, so 3 into minus 1 is equal to 0. Okay, so oxidation state is coming as plus 3. Oxidation state is coming as plus 3. Cobalt has plus 3 oxidation state, and this side is minus. So this coordination pair has plus 3 charge. Okay, this is cationic complex. Cationic complex माने देखो कोबाल्ट रही कोबाल्टेट है नहीं. Clear? তিনটা ethylene diamine, ethylene diamine contains di, so tri cannot be written over here, so we have to write trees. What do we have to write? Trees, or 3 trees, or 2 bees, or 4 tetrakis, or 5 pentakis. We have seen that thing. Okay, so trees, ethylene diamine. Here cobalt is in plus 3 oxidation state, so cobalt 3, outside counter ion is chloride. See the difference. If Cl is present inside, its name is chloride. If present inside the square bracket, then chloride. It is present outside, so it is written as chloride. Am I clear? এটা কলা गोटे मिनिट नियो ताकू टिक कर समस्ते ऑक्सीडेशन स्टेट काढ न जानि पारले जानि था एटा ऑक्सालेट आयन दिस इज ऑक्सालेट आयन हिंट्स दे देली समस्ते टिके करिवा को कष्ट करंतु कष्ट करले भगवान कृष्ण मिली जिवे कौन सब पिलांकर एबेठु दशहरा छुट्टी हे गलानी कौन रेस्पॉन्स आसु किछे रेस्पॉन्स आसु ओडिसा रे हमर पाठ पढिया पिला सीओ कौन हे
अरे भला ହେଇଛି ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲା ଛୁଟି ନେଇକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କରିବ କଣ ଆଗ ସଜାସଜି ସରୁ ଏବେ ପାଠ ପଢୁଥା ଏବେ ବା ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି କହନ୍ତି ଦଶ ବିଦ୍ୟା 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 ପାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶ ପାଠ ପଢିଲେ ହବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲା କଣ ଛୁଟି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର ଛୁଟି ଦଶହରାରେ ନଥାଏ if you want a good score read ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବ ଠିକ ଅଛି କଣ ଅଛି ଦିନରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢିଦବ ତାପରେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ 4ଟାରୁ ବୁଲି ପଳେଇବ ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ କାମ ପାଠ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପ୍ରଥମ କାମ ପାଠ ପାଠ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖ so here you have to find the oxidation state let the oxidation state of cobalt is x you have 3 ligands so I have to write 3 this is oxalate I have already shown you the structure COO minus COO minus so it has 2 negative charge it has charge minus 2 is equal to here you have charge minus 3 is equal to minus 3 then you can find the oxidation state is coming as x is equal to plus 3 isn't it so write the name tri 3 is there 3 ligands are there tri the name is oxalato the complex is anionic so I have to write cobaltate bracket rahiba 3 this is ionic so I have to put one ion over here no no okay ଆସିଲା এটা সহজ আসিଯିବ ডাইরেক্টলি এଠି আসিଯିବ অক্সিডেশন স্টেট হিসাব কର এটা ଅଛି -4 এଠି ଅଛି -2 সেপଟ গলে +2 so nickel will be +2 okay so directly you can write the name tetracyanide anionic complex so nickelate double ion okay tetracyanide nickelate double ion ଏଟାକୁ ପିଲେ ସିଆନାଇଡ କରିଦଉଥିବ ସବୁବେଳେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଦିଟା କ୍ଲାସ ହେଲାଣି ଶିଖେଇଛି ଏଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା କେମିତି ରହିଯାଇଛି ଓକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି କେମିତି ସେଟା ରହିଯାଇଛି ଜଣା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଦେଖ এই কমপ্লেক্স গোটে করদଉଛି এপର୍ଯ୍ୟନ୍ତ যেটা କରିଥିଲ ସବୁ ସମାନ ଟାଇପ ର ଲିଗାଣ୍ଡ ଥିଲେ କଣ ଥିଲେ ସେମ ଟାଇପ ର ଲିଗାଣ୍ଡ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କରୁଛେ ଯୋଉଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଲିଗାଣ୍ଡ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଲିଗାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ H2O ଲିଗାଣ୍ଡ ଅଛି ଗୋଟେ NH3 ଅଛି ସୋ এই কেস ରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟା ସେପଟେ କରିଦଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଅଛି Cu कौन देछि H2O whole 2 NH3
होल 5 अच्छी हो जहा अच्छी ठीक अच्छी जदि एमती अच्छी 5 नथिबा कथा ठीक अच्छी 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 आ जहा अच्छी देखिबे वर्तमान कॉपर रो केते अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट काढ x नेगली वर्तमान केतेटा अच्छी देखल H2O दीटा so for 2H2O I have to write 2 into 0 5 amines are there 5 into 0 amine is also neutral ligand and outside 2Cl minus is present so 2 into minus 1 is equal to 0 is equal to 0 so x is coming as plus 2 हिसाब करो आसिला वर्तमान देख एठी दी प्रकार लिगैंड अछंती गोटे अछि एक्वा एक्वा गोटे अछि अमीन ओके काहार डिक्शनरी स्केल अनुसार कोटा आग आसीबो ना देखा जाउची अमीन होनी के आछि अमीन केतेटा अछि पांचटा सो आई हैव टू राइट पेंटा अमीन सॉरी दीटा ए रखिबो पेंटा अमीन हेजबा पेंटा अमीन डाई aqua copper is on cationic side so continuously write copper in square bracket write side लिखिबो continuously write double I then outside Cl is present so write chloride clear देखो लिखा है पेंटामिन डाई aqua copper chloride होची गोटे क्वेश्चन अछि राइट द आईपीएसी नेम ऑफ NaBH4 क्वेश्चन टा को आउ थरे भी लिखि दउची एमती लिखा हेतिबो NaBH4 एटा कॉम्प्लेक्स दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट ताले मते कह आंसर कोन हबो एथरे किसी भाबिया को भी पड़िबनी किसी करिया को भी पड़िबनी रूल जे जानि छि तार हे जिवो टेट्राहाइड्राइड लिखा है छि ये हे परिबो नहीं एटा तार कॉमन नेम ठीक अछि हाइड्रिडो बोरन लिखा है छि बोरन टा एनायन साइड रे अछि बोरेट हवा कथा भूल हाइड्रिडो लिखा है छि चारटा हाइड्रिडो अछि टेट्राहाइड्रिडो हवा कथा एठी भूल एनकरी ए दीटा जाक भूल हे सालेनी एठी सोडियम रहिला बोरन हाइड्राइड 4 लिखा है छि एटा टेट्राहाइड्राइड हवा कथा एटा भी भूल अछि तो फास्ट तीनटा भूल जदी आंसर कोटा हेथिबो आंसर कोटा हेथिबो लास्ट होची देखो लास्ट हवा हां what is the IPC name of this one एटा जे ऑलरेडी करि सारिछे धड़ धड़ करिथिबो एटा को नै गला 3 एटा को नै गला x एटा हे गला -6 is equal to 0 x आसिला +3 माने ट्रिपल आई वाला माने ए दीटा भीतर कोठे ओटा आंसर थिबो ठीक अछि अब मतन एठी के अछि पोटेशियम सो पोटेशियम लिखिली तापरे अछि हेक्सासियानाइडो ओके फेरेट ट्रिपल आई ओके देखिबा कोन आंसर आछि ना
रश्मिता ना ना आईपीएस नेम पचार झिया आईपीएस नेम एटा होचे फेरिसियानाइटो आयरन लेखा हेची फेरी ए सब टर्म हमर नाही आयरन लेखा हेची आनायन साइड रे चलिबनी एगुडा सब कॉमन नेम रे थाई फेरोसियानाइडो फेरिसियानाइडो एगुडा का तांकर कॉमन नेम यार फेर पोटेशियम फेरोसियानाइडो फेरिसियानाइडो तांकर कॉमन नेम आईपीएस नेम पचाची फॉलो द रूल पोटेशियम आगर रहिला के पई पोटेशियम 6टा लिगैंड आगो लेखा हबो हेक्सासियानो और हेक्सासियानाइडो एफी पई फेरेट लेखा हबो 3 लेखा हबो ठीक अछि रूल अनुसार जीव सबले आईपीएस रे बिना रूल रे से हबो नाही ठीक अछि देखो अछि क्लियर अछि ना कोन सुविधा को ह एटा गोटे डबल सॉल्ट रे एग्जांपल पछी ऑलरेडी एटा करिथिले ठीक अछि अच्छा सुनो ए सब छाडी की एटा तो पुराना क्वेश्चन टा आ गोटे तुमको जिंस आज कहूची ताको टिके केयरफुली चेक कर ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट नोमेनक्लेचर ठीक अछि तम लेवल रे बे बहुत पचारुची सपोज एमिति अछि पीटी एनएच3 होल 4 पीटी सीएल4 ठीक अछि एटा को एमिति पे पचारि परिबो देखा सपोज अछि पीटी एनएच3 होल 4 ए पटा पीटी दे नथिबो पीडी देथिबो पीडी सीएल4 these are called coordination complexes माने cation भी coordination pair anion भी coordination pair ए भली केस रे नोमेनक्लेचर केमिति करिवो ठीक अछि ए भली केस रे नोमेनक्लेचर केमिति करंती सिखि जा बहुत सहज केवल गोटिए प्रिंसिपल माने रखिबो कम लेवल रे हायर लेवल रे अलगा अछि एक्सेप्शन गोटे अछि कहिबी ताको बट एबे पई तमे एतिकी सिखि था प्रथमे ए भली दीटे जाक जदी कोऑर्डिनेशन स्फीयर अछि दिस इज योर cation this is your anion okay हां एटा हे गला anion ओके जदी बोथ cation anion कॉम्प्लेक्स अछंती प्रथमे चेक करियो फर्स्ट लाइन रे चेक करियो एठी जतिकेटा लिगैंड अछि एपटे सेतिकेटा लिगैंड समान न थाई पारंती अलगा थाई पारंती बट नंबर काउंट कर दबो एठी केता अछि 4 एठी केता अछि 4 समान अछि ना नाही समान थिले तमरो सब प्रकार हेडाक हटि गला तमर कोनोसी असुविधा नाही कोन करिवो सिंपली तापर चेक करई मेटल सेम अछि ना अलगा अछि देखो एठी सेम अछि पीटी पीटी एठी किंतु पीटी पीडी डिफरेंट अछि हबा जदी डिफरेंट थिबो ताहले भी तमर किछ फरक नाही कि समान थिले भी असुविधा नाही ठीक अछि कोन नै जीव दी जन जाकंकर ऑक्सीडेशन स्टेट काढी को पडिबो दिस पीटी मस्ट हैव सम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस विल हैव सम so you have to find out the oxidation state for oxidation state take the oxidation of this pt as x this pt as also x if both have same number of ligands समान थिबा दरकार देखा एठी भी समान अछि तो यार भी नै जाय परिबो x यार भी नै जिवो x हला प्रथमे x रो वैल्यू काढी दियो ठीक अछि केते नौची देखो x plus 4 into NH3 has 0 charge. Here for platinum you have to take X plus 4 into Cl minus 1 is equal to 0. So X is 2X is coming as plus 4. So X is coming as plus 2. That means this platinum has plus 2 oxidation state. This platinum has also plus 2 oxidation state. Now you got the oxidation number. Now try to write the name. The first cation is written as this.
tetraamine ligand first. So I have to write tetraamine. This is on cation side. So name platinum will remain as such. Name platinum will remain as such. Oxidation state is +2. So I will write double I. The first part name is over. Then come to the second part. It is also a coordination pair. Write the name of ligand first. Ligand R4. So I have to write tetra. The ligand is chloride. So I have to write chloride. The name this platinum is on anionic side. So I have to write platinate. Its oxidation state is 2, so I have to write double. Okay, so this is the name. If here you can see same thing is there. Okay, same name will come. So write instead of this platinate, the name on the anion side will be palladate. Okay, other things will remain same. Clear or not? Just tell me is it clear or not? जदि एटा सीखी गला एटा करके ट्राई कर परिबा. सपोज देछि AgNH3 whole 2 AuCN2. Okay, so start writing the oxidation state. For Ag we have to take X. For 2NH3 you have to take 2 into 0. For Au, because same ligand, here 2 ligands are there, here 2 ligands are there. So Au will also be having oxidation state X. Then 2 into Cn minus means 2 into minus 1 is equal to 0. So then X is coming as +1. Find out 2x is equal to 2, x is coming as +1. Oxidation state of Ag is +1, Au is +1. Now just write the name. 2 amines are there, so diamine. Okay, diamine. Silver is on cation side, so there will be no change. Silver 1. Okay, now come to the anion side. DiCN minus, cyanide. This is Au, gold. This is on anion side, so orate will be the name. In bracket oxidation state 1 will be written. Okay, now if you know this one, then there is a homework for you. Do this one. CONH3 whole 6 CrCl6. See, both sides have 6 ligands. Ligand number is same. Then cobalt chromium. This will be cobalt 3. This will be chromate 3. I have given hints to you. You can do it by yourself, I think. Yes or no? Okay. This much you have. Already I have shown you all type of nomenclatures. Only one is remaining, that is your bridging ligand. When we will be discussing that one, we will know in the next class. Okay, so now here the class will be continued from the physics side. Okay, so do this homework and make sure you know the nomenclature.
नोमेनक्लेचर जेमिति हेले काउंसिल हो तमरे नीट जेई हो सबुथिरे प्रत्येक वर्ष गोटे क्वेश्चन पडुछि गोटे क्वेश्चन निहाते पडुछि ठीक अछि सब जिंस डिस्कशन कर देछि हेई जीवो तमे एतक प्रैक्टिस करले केवल गोटे रहिला ब्रिजिंग ताको लास्ट को सिखि जीवो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे विल स्टार्ट विथ आइसोमेरिज्म थैंक यू